Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So I requested to all of you, so first of all let me subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the making good conversation with me forever. So now we are going to get discuss about the eddy current. So what is eddy current? So eddy current means some induced current arises or develop whenever any bulk piece of metal placed into the changeable magnetic flux, whose pattern is just like swirling. It is like water. Okay. So due to this we have its name is eddy current. मतलब कोई मेटल का पीस है, उसको अगर हम किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स के रीजन में रखते हैं तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होती है, कुछ करंट इंड्यूस्ड होती है और उस इंड्यूस्ड करंट का जो पैटर्न होता है चक्कर खाते हुए पानी की तरह होता है. सो ड्यू टू दिस we have its name is eddy. So write down what is eddy current. So whenever any bulk piece of metal placed into the changeable magnetic flux, then some current induced whose pattern is just like swirling. It is like water. So due to this nature it is known as eddy currents. So let me consider here, this is a copper metal piece which placed between the two strong poles N and S. In the figure first, here this is a copper metal piece which placed through a rope and fixed from any point like A, and it takes place like SHM between the two magnetic poles N and S. So after some time it come at the equilibrium position. Why? So it is come at the equilibrium position due to the effect of eddy current. ओके, eddy current की वजह से ये कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है. सो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? सो हियर मेकिंग सब रेक्टेंगुलर स्लॉट्स, इनके बीच में जैसे कंघा होता कॉम, उसमें कुछ खांचे टाइप के बना दिए. अभी ये क्या थी? कंप्लीट प्लेट थी. अब इसमें हमने क्या किया कि कुछ ऐसे कॉम की तरह rectangular slots maker बना दिए. So whenever we make this rectangular slots, then now this metallic piece oscillate or takes place like SHM between the two poles N and S more easily. Okay, so now reduces the electromagnetic damping and plate swings more easily. If we make some rectangular slot, अगर इसके बीच में प्लेटों में हम इससे रेक्टेंगुलर आयताकार खांचे बना दिए, रेक्टेंगुलर स्लॉट्स, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग थी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी और इजीली करंट पास हो जाएंगी. जो एडी करंट्स थी वो इजीली पास कर जाएंगी और इससे ये जो प्लेट्स थी इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इजीली स्विंग कर जाएगी. जैसे ऑसिलेट कर रही थी पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इजीली ऑसिलेट कर जाएगी. ओके, and this is more helpful to reducing the eddy current in the transformer, electric motor and such type of devices which prepared by the wounded the laminating of the wire. Okay, so this is useful for the reducing of electromagnetic damping. Okay, so now here making some rectangular slots of this metallic plate. Due to this the electromagnetic damping reduces and this metallic plate swings very easily between the magnetic poles, and this is more helpful to the reducing of eddy current in the transformer and electric motor and other such devices which are making in the same way by the wounding of laminating core. Okay, and here this rectangular column like this filled by the
lacquer. It is an insulating substance. ओके, ये एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है और ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बनाए थे उनके बीच में ऐसे इंसुलेटिंग सब्सटेंस से फिल्ड कर देते हैं जिससे कि एडी करंट्स के फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इजीली ये कॉइल या मेटलिक प्लेट इजीली स्विंग करता रहता है, मूव करता रहता है. ओके, सो एडी करंट्स minimized by the using the lamination of the metal to make a metal core. Okay, so eddy currents minimized by the using of lamination of metal to make the metal core. Okay, and the lamination are separated by this insulating substance, like its name is lacquer. Okay, so now usage of eddy currents. So it uses for the magnetic braking in the train. Second one is the electromagnetic damping, and third one is induction furnace, and last one is electric power meter. Okay,